all present here. On behalf of Pragati Group of Institutions, I extend a warm and happy good morning to all of you on this August occasion. We have with us our honorary guests. Our chief guest of the occasion has also arrived. I request all the teachers to ensure that all the students are present in their respective places. All the troops must be ready for the march past. We have in our agenda welcoming of the guests onto the dais, followed by the introduction of our honorable guests, followed by the flag hoisting by the chairperson and the national anthem. Happy birthday ho. Happy birthday. बाजरी जी दिली मने पडला हे मने पडला ए बर्थडे पैसा गरेर पण तू बर्थडे पैसा बर्थडे पैसा गरे चलो ठीक है फुल मते को स्टार्टिंग Bank group, be ready. DSLR कैमरा ଅଛି ଏଟା କର କହି ଦନି ଏ चेयरमैन साहब 1 to 6 टाइम पासवर्ड तो इन बच्चों खाना वाले मारी मोड़ा 10 ठीक है ये फोटो करो ना वीडियो तो फॉलो वीडियो के सारा स्टूडियो स्पीड वाला ये क्या बर्थडे है ना सर हैप्पी बर्थडे। मैं सुबह से उसको तैयार करने में जो हम लोग घूम रहे हैं। अरे मैं भूल गया था कब यार आज पार्टी चलिए बोल देता हूँ आज बंद टेस्टी फूड वाले तुम्हारो अधा कुआडे गले अधा गुडी आज चाटसी दिमाग मीठा डे नहीं रहा आप रेड के से पहले वहाँ ऑरेंज और व्हाइट पहन के आपको ग्रीन पहन के घूमना था। या फोटो नहीं किया था इधर कौन पड़ी गया गाड़ी आसो दे पैसा नहीं ना ये लगी शर्ट पैंट किनला तो पैसा अछि गुड एटा धरि सिले दउ छ टेलर तो अच्छे बढ़िया गाना कपड़ा आनो ओ अशोक सर इनके जो अशोक सर के बोले है ना हम पहुंचा दो गाड़ी न्यू स्टार्ट हमारे गाड़ी से बुल्ला बोले गाड़ी नहीं जल्दी रेडी करो
वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्नपुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। राष्ट्र वंदना के साथ आज के पुण्य और शुभ अवसर पे मैं पुण्य दीपक हमारी आप सभी का भारतवर्ष के 77तम स्वाधीनता दिवस पर प्रगति अनुष्ठान की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वृक्ष हूँ भले खड़े हूँ घने हूँ बड़े, वृक्ष हूँ भले खड़े हूँ घने हूँ बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। महान कवि और देशभक्त श्री हरिवंश राय बच्चन जी की यह वाणी आज के अवसर पर हम सभी को इस महान देश की एकता, स्वतंत्रता, अखंडता, उन्नति और प्रगति के कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करती है। हर साल हम सभी भारतीय इस अवसर को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आज फिर हमारी स्वाधीनता के अर्थ को समझने और हमारे गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे गर्व है कि एक शिक्षिका के रूप से आज के अवसर पर मैं सभी का स्वागत कर रही हूँ। हर्ष है कि इस पावन अवसर पर हम सभी को प्रेरणा देने और सन्मार्ग दिखाने के लिए हमारे बीच हमारे बहुत ही खास विशिष्ट अतिथियों पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार हम बहुत देर से कर रहे थे। मंच पे अब उन्हें मैं आमंत्रित करने जा रही हूं। मंच पर उपस्थित हैं हमारे अनुष्ठान की सभाध्यक्ष माननीय श्रीमती सुश्री संगीता पंडा जी को। मंच पर स्वागत करती हूं अनुष्ठान के मुख्य सचिव सम्माननीय श्री अजय कुमार पंडा जी को। हमारे सौभाग्य है मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दिगंबर पात्र जी को आमंत्रित करने में। मंच पर निमंत्रण करती हूं श्री प्रणव कुमार पंडा महोदय जी को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रगति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। उनके साथ आमंत्रित करती हूं श्री विश्वजीत मोहंती महोदय जी को, हेड ऑफ स्कूल प्रगति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री जगन्नाथ त्रिपाठी महोदय जी को, प्रिंसिपल ऑफ प्रगति डिग्री कॉलेज। उनके साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री शशदेव मोंड महोदय जी को, प्रिंसिपल ऑफ प्रगति साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल। विनम्र स्वागत करती हूं श्री चिन्मय गुरु महोदय जी को, प्रिंसिपल ऑफ प्रगति कंसेप्ट स्कूल। उनके साथ निमंत्रित करती हूं श्री लोकनाथ खड़ेकर महोदय जी को, हेडमास्टर ऑफ प्रगति कॉलेज स्कूल। मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री आर्षा शैला महोदया जी को, प्रिंसिपल ऑफ प्रगति कॉन्सेप्ट स्कूल जूनियर विंग्स। मैं चाहूंगी हम सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि कृपया आप सभी मंच पर आने की कृपा करें। सर हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती मधुस्मिता पंडा जी। हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार है आज यहाँ पहुँचने के लिए। इसी समय का, इसी पल का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था।
विनम्र अनुरोध करती हूँ विद्यासागर मुंशी को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you, ma'am. From where ma'am began, I would like to resume with the words of the great poet Shri Harivansh Rai Bachchan साहब। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अग्नि श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। We are here today to celebrate our 77th Independence Day. It seems as though 77 years have passed in a whiz. When we are here, all of us standing together to celebrate the vibrant democracy, the vibrant idea, the vibrant way of life that is India or Bharat. When we first gave ourselves our independence, we started this journey with a dream. I remember the words of a great civil rights fighter, Martin Luther King, who once very famously said, "I have a dream." And I believe all of us are Indians. The same dream, the dream of making and carving a prosperous India, healthy, safe, secure, wealthy, and most importantly, intelligible. I believe today's day, today's occasion calls for all of us to recall and remember the sacrifices that all the great men and women of this great nation have done towards the contribution of building of this great nation. When I use the words nation, I do so intentfully, because it would be prescient to mention that a nation is greater than a country. Because as they say, India is not just a flag. It is not a sketch on a map. It is not just an idea. As I mentioned earlier, it is a way of life. And we are here all not just to stand on ceremony, but also to understand, to emulate, to imbibe, and to practice what it means to be an Indian. In the words of one of the most popular executives of this great country, Shri Pawan Verma, from his book Being Indian, there is a difference in just being Indian and becoming Indian. And that precisely tells us that all of us here are Indians not just by birth, but also by our way of lives. I once again welcome our chief guest, respected Secretary Sir, Honorable Chairperson Ma'am, all the heads of schools, the school head Shri Mahanti Sir, Group Administrative Officer Shri Pranab Sir, all my respected colleagues and beloved children on the 77th Independence Day. May I now request Punyadipa Madam to please continue further and request our guests for releasing of pigeons. May I request all our guests to please come down the dais for flag hoisting. May I request Honorable Chairperson Ma'am to hoist the flag. I request all the students to kindly stand up. All of us may please stand up and be ready for national anthem. Band.
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब सुभाषिष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि आज के अवसर पर शांति और आज़ादी के प्रति कबूतरों को नीले गगन में मुक्त करके हम सभी को आज़ादी का संदेश दें। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, मंजिलें जमी भर नहीं। आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। बहुत खूब निवेदन है, पुनः आप सभी अपने स्थान पधारें। मैं निवेदन करती हूँ विद्यासागर जी को वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। I would now like to introduce our chief guest of the occasion, Shri Digambar Patra sir. You have been a designated professor of chemistry at the American University of Beirut. You received your PhD in chemistry from the Indian Institute of Technology, Madras. You have your postdoctoral fellowship
at the University of Basel in Switzerland. You have then received prestigious Alexander von Humboldt Research Fellowship to conduct research at Jülich in Germany. You have also been awarded European Fellowship to work in the Catholic University Leuven in Belgium. With us, we have Sir, who is also an adjunct professor at the National Institute of Technology, Meghalaya in India. You have served as an editorial board member for several journals. You have received numerous awards, including the Alexander von Humboldt Research Fellowship in 2002, the Europe Research Fellowship in 2003, the JSPS Postdoctoral Fellowship in 2004, and the renewed Alexander von Humboldt Research Fellowship in 2010, the Arab American Frontier Fellow in 2015, and the board designated professorship in 2022. You have also been selected as one of the world's top 2% scientists by Stanford University in the year 2020. Your research interests include nanochemistry, metallic nanoparticles, fluorescence spectroscopy, sensing and probe, and the study of nanoassemblies. You have published more than 135 research journal articles in top research journals and more than 50 international conference presentations. Might I also add humbly that you are also a son of the soil of Kalahandi. May we have a round of applause for Professor Patro. As it is famously said in English, every successful man has a woman behind him. We also have Mrs. Madhusmita Panda, who is also a professor at Beirut, along with us. Welcome to you, ma'am. We have with us our chairperson, Srimati Sushri Sangeeta Panda. She has been the backbone of Pragati Group of Institutions for more than a decade now. Welcome to you, ma'am. We also have with us Honorable Secretary Sir, Shri Ajay Kumar Panda. We all know him, we love him, admire him. Welcome you once again, sir. Head of Schools, Shri Bishwajit B. Mahanti, sir. I believe there is rarely anyone present here who doesn't know who he is and what he has done for our institutions. Welcome to you too, sir. I welcome Shashdev Mund, sir, Chinmay Guru, sir, Khadikar sir, Arsha ma'am, and Pranab sir to the stage as well on this occasion. May I now request Honorable Secretary Sir, Shri Ajay Kumar Panda, to address all of us and enlighten us. Sir. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. I just can feel the patriotic feeling that flowing across all of you present here. As chief guest, Professor D. Bhawanipatna sir, Honorable Chairman of the Pragati Trust, Pragati Institution, Srimati Sangeeta Panda, Honorable guest, Srimati Madhusmita Madam, all the heads of the wings of Pragati institutions, school head, Mr. Mahanti, administrative officer of the group, Mr. Pranab Panda, all the faculty members, invited guests, parents of the institutions, all the NCC cadets, NSS volunteers, Red Cross volunteers, and finally, my dear students. On this momentous occasions of India's Independence Day, on this 77th Independence Day, I stand before you with a heart filled with pride and gratitude. I am honored to address this gathering and reflect on the significance of this day. Today,
As we celebrate 77th anniversary of our nation's independence, a milestone that fills us with immense joy, a sense of accomplishment. It's a day to remember and pay tribute to those all brave souls who fought tirelessly, who sacrificed their lives for our freedom. The leaders who envisioned an inclusive and prosperous India, and the countless sacrifices made by millions of fellow Indians against the British for more than 200 years, who give everything in their life to build these great nations. Let's remember all those freedom fighters who not only made these nations great and who had long vision for these nations. Let us remember that great Bapuji, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, the great Subhash Chandra Bose, and also the freedom fighters of Odisha, Gobandhu Das, Madhusudan Das, and also the great freedom fighters of our Western Odisha, Veer Surendra Sai, and of course the son of soil, Sahid Rendo Machi. Independence Day is not merely a date on the calendars. It symbolizes the spirit of unity, diversity, resilience that defines the whole India. Our country is a tapestry of culture, language, tradition, and we take pride in our rich heritage. As in education institutions, it is our responsibility to nurture and instill all these values in our students, preparing them to become the responsible citizen of India. As we celebrate this progress and achievement of the past, we must also reflect the challenges they lie ahead and always lying ahead from the day we got this independence. Our nation faces and have been facing socio-economic and environmental issues that demand our collective effort. Everybody present here must put their hand for building a great nation. It is essential that as a community, actively we engage in the effort to address all the challenges and work towards a brighter and sustainable future for our beloved India. India today is a global leader. You must have seen that we have launched Chandrayaan 3, and I'm sure that in the coming days we're going to means the men from India are going to land in the moon very soon. And most importantly, we have the resources that is the powerful youth today, and who are going to lead the world in the coming days. And I personally believe that education is a powerful tool that saves the destiny of any nation. As an educators, we have the privilege and responsibility to empower our students with knowledge, critical thinking skill, and empathy. Let us strive to foster an environment that encourages curiosity, creativity, and the thirst for lifelong learnings. On these occasions, I extend my heartfelt gratitude to all those teachers, all the supporting staffs of these Pragati institutions today because of their effort, because their consistent effort for the last decade. Today we have been so successful in all this academic, and even today I believe that in the non-academic also we stand taller than any other institutions. And your commitment and patience are definitely the building blocks for our schools. I also express my sincere appreciation to the parents and the guardians for entrusting us with the education and well-being of their children. Their unwavering support and encouragement are definitely invaluable to us. They have supported. I do remember those days during the COVID times when we got a lot of support from the parents all across the district, I think, that we cannot forget. And as we celebrate the Independence Day, let us recommit ourselves to the progress and development of our nation. Let us work together with a shared vision of an inclusive, prosperous, and harmonious India. I again wish all of you a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata Ki.
Thank you very much, Ajay sir, for inspiring us and giving us the faith once again, restoring the faith, I must say, that we can and we will. May I now call on the dais, Honorable Chief Guests of the occasion, Professor Shri Digambar Patra sir, to enlighten us with his ideas. Sir. May we have a round of applause for sir. जय हिंद। आपण समस्त को मोर नमस्कार। Respected Chairman of Pragati Group of Institutions, Mrs. Ponda, Secretary of Pragati Group of Institutions, my dear Ajay Bhai, who has transformed the educational scenario, especially the private education in Kalahandi. So big applaud for him, for his contribution for this region. Especially it's an oasis, so in the desert. And I think my wife, other guest, Miss Panda, other dignitary on the desk, principals, parents, and most importantly, faculty, staff, your hard work for building these institutions. And at the end, not the least, but most valuable to all of us, our dearest students. And I can see very colorful, bright, beautiful campus with colorful, enthusiastic, very, I can say, sometimes we use negative words like silly, but silly can be beautiful too. Innocent children having different colors, different thoughts. So in Gita, there is a term all of you know, I am one, but I am many. I may be one person, but all the persons sitting around here can have different image for me alone. So this is what it is. So it makes the campus more beautiful because I see a multi-dimensional matrix where we have different colors, different flavors, and different thoughts. Let me first congratulate all of you for the 77th Independence Day. So I will mix up what I want to say in Odia and English, maybe in Hindi, but I prefer Odia and English. आम माने जते बेले स्वाधीनता दिवस पालन करूचु आम मन रे कोन आछि विशेष करी आम माने भाबुचु महात्मा गांधी स्वाधीनता आनी थिले जवाहरलाल नेहरू अनेक फ्रीडम फाइटर को कथा अजय भाई भी कहि गले हेले सेटा अतीत हे गलानी आमे स्वाधीनता पाई 75 वर्ष अतिक्रम कलोनी से भितरे भी आमर अनेक संघर्ष हेची अनेक किछु आमे पाई पारिनु अनेक किछु पाइछु तो आमर कर्तव्य कौन आजिर दिन रे आमे निज निज भितरे भी भाविबार अछि महात्मा गांधी अनेक किछि करि जाइछंती हेले आमे आम देश पाई कौन करिबु कौन करि पारिबु सेते बेले आमको स्वाधीनता थिला जहा केवल राजनैतिक ताकू आमे कहू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किंतु आमको भाबे को पड़िबो आर वी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट सेटा भी भाबे पड़िबो तापरे आसे आर वी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सो इंडिपेंडेंस रो अर्थ स्वाधीनतार अर्थ अनेक किछि होई पारे
आज आम जहाँ सेलिब्रेट करुचु आपको उत्सव भाव में पालुचु ताहा केवल राजनैतिक स्वाधीनता आमर कुनी कुनी छुआ पिला आउ जते शिक्षक अच्छा समस्ते जानुचंती आमर स्वाधीनता पाई आमर अनेक किछि लड़ाई हेछि हेले आमे जेतेबेले स्वाधीनता पाइलु आपण मानक शिक्षक मान जानी थिबे भारत रे खाइबार अभाव थिला आमे कहूचु आम देश जे चाष प्रधान देश आमे कही आसुचु महात्मा गांधी भी कहूथिले किंतु आमको अमेरिका रु जदि गहम न आसीबो ताहेले आमे क्षुधा मेंटेई पारु नथिलु बहुत लोक मन रखिथिबो गाँ गाँ रे गहम दिया होथिला किंतु आपण को खुशी लागिबो 75 वर्ष परे आमे गोटे फूड सरप्लस देश जोटा बेसिक आज चाउल रप्तानी रे भारत विश्व रे 1 नंबर एटा गोटे उदाहरण द्वितीय उदाहरण गहम जो गहम आमे अमेरिका रू आणुथिलु आमे हुए तो रप्तानी रे पृथ्वी रे 1 नुह आम खाइबा पाई भी जेमती ओडिशा रे आमर गहम हुएनी आमे जते राति रे रोटी खाऊ अन्य देश रु आसुछि आमे जते बेले देखुछु गहमटा भी आमे अनेक देश रु किनिथिलु 25 वर्ष तले भी किनिथिलु रशिया रु आसे किंतु आपन को खुशी लागबा विगत 3 वर्ष हैला आमे गहम रप्तानी करूछु आमर द्वितीय आउ सुगर केन सेटा तो आगु थिला सेतिरे आमे विशेष किछि सफलता पाइनु जदि भी आमर चीनी थिला एटा गोटे मु चाषर उदाहरण देली आउ आपण मान जानिथिबे विज्ञान क्षेत्र रे आमे मून को गलेनु चंद्र को गलेनु हेले मो कहिबा कथा आमे जते बेले स्वाधीनता दिवस पालन करूचु आमको मुख्यतः 3 विषय रे चिंता करबा को प्रथम हैला वस्तुवाद जहाँ को आम मेटेरियलिस्टिक लाइफ कहूँ वस्तुवाद जीवन रो रिक्वायरमेंट आ वस्तुवाद जीवन रो रिक्वायरमेंट पाई द फर्स्ट टूल इज साइंस विदाउट साइंस यू कैन डू एनीथिंग मु वर्तमान जो कथा कहूँ ताकू आपण पाखरे पहुँचेबा पाई भी गोटे साइंटिफिक टूल नौच तो विज्ञान रो आवश्यकता अच्छी विज्ञान को आमे वस्तुवाद को एड़े दे पारिबानी जहाँ को आमे अनेक समय रे किछि लोक अवहेला कर दियंती वस्तुवाद जीवन हेबा कथा नुह किंतु वस्तुवाद गोटे दरकारी ता अर्थ नुह कि वस्तुवाद सब किछि तो आमको विज्ञान क्षेत्र रे जदि आग को जीवार अच्छी ताहेले आमको देखिबा को पड़िबो कि आमर कौन सब कंट्रोल रे आस जेमिति हला इकोनॉमिक फ्रीडम जोटा मु आपन को कहूथली इकोनॉमिक फ्रीडम आमे कॉलोनाइज देश रो तो पळे आसिलु बट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वर्तमान तथापि इकोनॉमिक लिबर्टी आमर नाही आमे डिपेंडेंट इंटरनेशनली आमे डिपेंडेंट आम पाखरे मोबाइल फोन अच्छी एप्पल कि जो कंपनी चिप्स आसुची अन्य देश रो आछि यार इंडिपेंडेंस हेबा को हेले आपण मानकु आमर शिक्षक मानकु आमको गवेषणा करी आम निज टेक्नोलोजी तैयारी करबा को पड़िबो तो आमे देश को बढ़िबा पाई आमे विज्ञान क्षेत्र रे अवदान देई पारिबु ए क्षेत्र रे आमे अनेक किछि काम करि पारिबु जेमिति वर्तमान चिप्स हैला चिप्स माइक्रोचिप्स हैला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान जो चली रोबोटिक्स धीरे धीरे आम चाष कम जिते लेबर रे करूँ धीरे धीरे मशीन हम आपको एडप्ट करने को पड़ो आमे न कले आउ किए करदेव से टेक्नोलोजी डेवलपमेंट आपण मैंने ही करें आउ मु अनेक थर कही बोधे प्रगति रे भी कही भारत रे वैज्ञानिकों आवश्यकता अनेक अच्छी चाइना रे प्रति मिलियन रे 12 वैज्ञानिक विदेश रे ताहा हजारे विशेषकर अमेरिका जर्मनी स्वीडेन आम भारत रे तार तुलन रे 3
एमती किसी अंक अच्छी ताहले आवश्यकता अनेक अच्छी एटा है स्वाधीनता आमर है केमिति इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है द्वितीय है आपण को सोशल इंडिपेंडेंस अर्थ कौन कि आमे जेते बेले आमे जो थॉट्स प्रकाश करूचु अन्य माने ग्रहण करंतु ना न करंतु ताकू सम्मान दे शिखिबा आउ या सहित नैतिकता अछि आमे जेते देखिबु विकसित देश भारत गोटे विकसित देश कहे आमे समस्ते चर्चा करू दुर्नीति ऊपर किंतु दुर्नीति हुए तो 10% लोक दुर्नीति खोर हो पारती आउ 10% लोक पूरा दुर्नीति विरोधी सचोट हो पारती 80% लोक डुएल करती डुएल अर्थ अपरचुनिस्टिक आमको दरकार पड़े बाध्य को ऑफिस जाइथिबु काहाको 2 टंका देबाक पड़िबो 100 टंका देबाक पड़िबो आमे बाध्य बाध्यकतार दो कामटा केमती हेई दिबो बोली एहा को इंडिविजुअल फाइट करी हबनी एहा पाई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दरकार अवेयरनेस दरकार तार स्वाधीनता आसीबो केन आपण आमे जो लांच कथा कहूँ जर्मनी भली देश में मुझे रही कि जापान भली देश में कौन सी पब्लिक वर्क मु जाइनी जो मत लांच देवा न पड़ी नहीं पड़ी तो सेठी केमती हो पारुछि लोक सेठी केमती एमती मोर गोटे उदाहरण दूची जापान रे गोटे मु सुपर मार्केट को जाइथिली मु से पैसा फेरेला मु धरिकी पळे आसिली गोटे येन बाकी रही जाइथिला गोटे येन रो किछि वैल्यू नाही सेथिरे 100 येन रो वैल्यू रोछि से गोटे येन फेरेबा पई से 20 मीटर चली आसिला रास्ता क्रॉस करके मते फेरेला ए मानसिकता केमती ट्रांसफॉर्मेशन हेबो आमे शिक्षक भाव रे आम स्टूडेंट को भी सिखेबार अछि स्टूडेंट भाव रे ताहा को सिखिबार अछि आमे अनेक थर विशेष करी आम कलाहांडी माटी रे अन्य को खुशी करबा को सामना रे आमे सेमती कथबार्ता करूँ तापर किछि घंटा गला परे आमे विचार करूँ एक्चुअली लोक जहाँ कहूला हुए तो सेटा ठीक होई ना पारे आमे रेशनल जोटा आमे चिंता करूँ रेशनालिटी रे सेटा आसी न थाए किंतु जर्मनी रे देखिछि सामना सामने रे कथा हेबे आउ सेते बेले आपन को खराब लगे सामना रे किंतु आपन घर को फेरी जेते बेले भाबिबे लोकटा ठीक कहूला मोर भूल या आम से दिग को चिंता करबा कथा आमर नैतिकता नैतिकतार भी स्वाधीनता आनिबा कथा आ तृतीय जोटा भारत अनेक दिन रही जोटा को आम ह्यूमैनिटी कहते मानवीय दृष्टिकोण स्वाधीनता आज मानवीय दृष्टिकोण भारत रे कौन हो धीरे धीरे जिते बड़े आम विकास करुचु जिते बड़े आमर प्राइवेटेशन होची विभिन्न एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन आउची धीरे धीरे मानवीय भी आजिकल कमर्शियल हो गला लोक मानवीयता नहीं टंका कमाउछन्ति अनेक फ्रॉड बाहरुची आपण माने भी पढ़ुथिबे न्यूज पेपर रे से मानवीय दृष्टिकोण को आमे जेमती स्वाधीनता पूर्व जेमती गांधी समय जेमती थिला ताकू केमती फेरई आनिबा आम निज संस्कृति निजर परंपरा को से स्वाधीनता आम केमती फेरई आनिबा से दिगरे भी आमको काम करबा अछि तो विशेष करी ये 3 पॉइंट भितर मु कहबा को चाहूतिली आउ आपण माने विशेष करी अजय भाई मते मौका देथिबारु एक ब्यूटीफुल कलरफुल ऑर्गेनाइजेशन आउ इवेंट्स रे पार्टिसिपेट करबा पई आपण मान को समस्त को अजय भाई को विशेष विशेष धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you so much, sir. It was indeed worth listening to you because you did not just inspire us, but at the same time showed us the way forward, because we have at all times present with us the past, the present, and the future of the nation. You inspired the present, and at the same time you urged and called upon the future of this great nation to know
to understand, to realize, and then to implement. Thank you very much, sir, for finding time to be with us. May I now request all our honorable guests now we will have our parade inspection. May I request all our honorable guests to kindly stand up. जय श्रीमान श्रीमान, आज के स्वाधीनता तंत्र दिवस के परेड पर एक कमांडर, 14 प्लाटून, कुल मिला के 350 कैडेट आपके सामने निरीक्षण के लिए हाजिर। जय श्रीमान। Our parade inspection has begun. Honorable Chief Guest, the vehicle carrying our Chief Guest DVT and CC goals and goals. Now we have plus 2 science CHC. Plus 2 science CHC goals. Followed by plus 2 science CHC goals for first year. First year. Operation Wonders and the flag bearers saluting the best. Followed by the college and school boys division. Coming up, first year CBSE with the green flag. And the penultimate group, the 12th, the second year CBSE. Heartily saluting our chief guest and honorable secretary sir.
हेलो हेलो तुम दयाला धरवाले तुम तुम फोटो को जेटा कले के करवा फिर आमे करू ए मनोर के कहू के दिया है जी कैमरा खूब के दिया है माने का के दिया है केटा तभी ना बोलू थे यार के भीतर जय श्रीमान। श्रीमान, परेड को मंच से गुजरने के लिए आप अनुमति प्रदान करें। जय श्रीमान। loco, yo, bro. Loco, pasar. Super loco, chico.